Hello student, this is motion part 11. Today we are going to discuss the extra questions of motion as we did in part 10. So here our first question is, an object traveled 20 meter in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of the object? So an object means उस ऑब्जेक्ट ने पहले जो ट्रैवल किया 20 मीटर 4 सेकंड में, उसके आगे का 16 मीटर उसने 2 सेकंड में ट्रैवल किया. Object is same. First object traveled 20 meter 4 second. Again the same object travels 16 meter in 2 second. What is the average speed? So the average speed formula is total distance upon total time. So you need to practice like this. First you go through the question, interpret the question, find the formula which can be used in the question, and then do the solution and then match your solution with this video. So solution is total distance become 20 meter plus 16 meter. Total time become 4 second plus 2 second, that is 6 second. Average speed is total distance upon total time, that is 36 upon 6, that is 6 meter per second. Now the second question is, an object dropped from a cliff. Now there is some new thing is there in this question. Anything which we dropped from a height, in that case u become 0. कोई भी चीज अगर हम एक हाइट से फेंकते हैं, उस केस में u की जो u माने इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो 0 होती है. So with the constant acceleration of 10 meter per second square, उसका acceleration ये है. Find its speed 5 सेकेंड आफ्टर इट वॉज ड्रॉप्ड. 5 सेकेंड बाद उसकी स्पीड क्या होगी? तो इनिशियल आपको पता है जब कोई चीज ड्रॉप की गई तो u0, एक्सेलरेशन दिया है, टाइम दिया है, फाइंड इट स्पीड. कौन सी स्पीड पूछी है? v. नाउ विच फॉर्मूला वी कैन यूज? ए दिया है, टाइम दिया है, u0 है. क्यों u0 है? कहीं गिवन नहीं है, बट इफ यू विल गो थ्रू द क्वेश्चन you will find out an object dropped from a cliff. जहां पर भी ये ड्रॉपिंग वर्ड आए वहां पे u 0 हो जाता है. v is equals to u plus at, that is the equation we need to use. u0, v is equals to 0 plus a is 10 cross 5, that is 50. Now the next question is, an electric train is moving with a velocity of 120 km per hour. How much distance will it cover in 30 seconds? Again, electric train is moving with a velocity of 120 km per hour. तो 120 km per hour इसकी initial velocity हो गई, that is u. Distance पूछा है, that is s. Time is given 30 seconds. तो convert first, see the all the values. किलोमीटर per hour है, here it is second. तो first we need to convert this kilometer per hour into meter per second. Now we find out the s distance. तो formula become s, u is 120, time is 30 second, speed is change कर लो मीटर पर सेकेंड में 11.1 मीटर पर सेकेंड, 5/18 से we will cross it. Time is 30 second. Now distance is equals to speed into time. यहाँ पे हमने u वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया? s is equals to ut plus half at square, क्योंकि यहाँ पे a नहीं गिवन है, फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता. लास्ट वाला why did we didn't use the last one? v square minus u square is equals to 2as, because यहाँ पे भी a नहीं है, v भी नहीं है, तो we can't use. So this is the distance is equals to speed into time, that is 330 meter. So you have to find out the formula which you can use in different questions. Now a car is moving with a uniform velocity of 10 meter per second. The driver of the car decided to overtake the bus moving ahead of the car. So the driver of the car accelerate 1 meter per second square for 10 seconds. Initially 10 meter per second है u. Acceleration जहाँ पे ये square term आता है वो a होता है, तो a is 1 meter per second. Time is 10 second.
Find the velocity of the car after at the end of 10 seconds. आखिरी में क्या हुई? That is V पूछे है. Also find the distance traveled by the car while accelerating. S भी निकालना है. Find the distance. So you have to find out S. So in this question you have to find out velocity and you also need to find out the distance. Again, given value U is 10, A is 1, time is 10 seconds. All the check meter per second square, and this is in second. Equation for find the value of velocity. Velocity के लिए V वाली ये वाली equation 10 plus 1 plus 10 20. Now for distance, again it's your choice. Any equation you can use, either S is equals to UT plus half AT square or V square minus U square is equals to 2AS. From both the equations, same answer will be there. That's why I solved both for you. See, जैसे जैसे आप वैल्यू रखते जाएंगे, you will find out both the answer is same. अब this is your choice. Either you wish to do with the S is equals to UT plus half AT square, or if you wish to do with the V square minus U square is equals to 2AS, you can do with this. But square should be properly in bracket, that is 20 square minus 10 square 2 into 1 into S. 2AS का मतलब होता है 2 cross A cross S. Here T square, so you have to do again 10 in bracket and square. तो 10 का square हो गया 100. 10 into 10 is 100. पहले multiply होता है, then add होता है. 100, 10 cross 10 is 100 plus half cross 100, that is 50, then 150. Do this calculation very properly because this is all mathematical calculations. Where it would be multiply, when it would be add. Many of you did the mistake like this before also in the previous classes also. 10 cross 10, अब half को इससे डिवाइड कर दिया या ऐड कर दिया, 10 प्लस हाफ पहले कर दिया फिर क्रॉस किया. तो डू द सी द इक्वेशन प्रॉपर्ली एंड देन डू द मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन अकॉर्डिंग टू दैट. Now the fifth question is, an object P is moving with constant velocity for 5 minutes. Again, minutes you have to change it. Another object Q is moving with the changing velocity for 5 minutes. Okay, this is not the numerical, this is some descriptive question. एक ऑब्जेक्ट P है जो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है 5 मिनट तक, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई है 5 मिनट तक. कांस्टेंट वेलोसिटी मींस वेलोसिटी इज नॉट गेटिंग चेंज. दूसरा ऑब्जेक्ट है जो वेलोसिटी जिसकी चेंज हो रही है 5 मिनट तक. आउट ऑफ दीज टू ऑब्जेक्ट व्हिच वन हैज एक्सेलरेशन एंड एक्सप्लेन व्हाई. Q हैज एन एक्सेलरेशन, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेलरेशन होगा. क्यों होगा? Moving with the change in velocity, and if the velocity changes with respect to time, there would be acceleration. Acceleration का definition है, अगर velocity change time के according हो रही है तो an object is accelerating. So out of P and Q, which one is accelerating? That is object Q is accelerating. Define acceleration and give its SI unit. When is acceleration of a body is negative? Give 2 examples of situations in which acceleration of the body is negative. Again, acceleration. Acceleration is defined as rate of change of velocity, or we can say velocity change per unit time. वो भी लिख सकते हैं. If an object is moving with initial and attain the final velocity with time, then A is equals to V minus U by T. SI unit meter per second square. तो ये पूरा डेफिनेशन हो गया एक्सेलरेशन का विद यूनिट विद इक्वेशन. एक्सेलरेशन इज सेड टू बी नेगेटिव व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन. जब ऑब्जेक्ट में ब्रेक लगता है या ऑब्जेक्ट स्लो हो रहा होता है तब हम उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट देयर इज एन एक्सेलरेशन व्हिच इज नेगेटिव और रिटार्डेशन. द एक्सेलरेशन इज इन द अपोजिट डायरेक्शन एज दैट वेलोसिटी. अगर कोई ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जा रहा है एंड वी आर अप्लाइंग ब्रेक, देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन. तो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एज द वेलोसिटी. Thus this object has negative acceleration. This is the definition of negative acceleration. Example, when the car applies a brake,
स्टोन इज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींच रही है और हम उसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो उसको भी हम कहेंगे एक्सेलरेशन इज नेगेटिव. Distinguish between uniform motion and non-uniform motion, and these you can write in your own language with the help of PDF, with the help of definition. Is uniformly accelerated motion is uniform motion? Uniformly accelerated motion. Uniformly accelerated motion means if an object, in an object, if the velocity is changing with equal amount in equal interval of time. Uniform acceleration होता है if the velocity of an object is changing equal amount in equal interval of time. क्या उसको uniform motion कहेंगे? Give an example each of uniform and non-uniform motion. So where's the solution? Uniform motion is when the body travel with the same speed in the same direction, or you can write if an equal displacement in equal interval of time, equal distance travel in equal interval of time. Anything? Non-uniform when the body travel with different speed or direction, or non-uniform motion is when an object travel unequal distance in equal interval of time. That is also I have already given in notes in the PDF, so you can write that also. No, uniformly accelerated motion is not uniform motion. Kyun? As some value of the acceleration exists, that is the value of velocity is changing, so the direction may change and hence it is non-uniform. क्यों उसने कहा यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन है, जहां पर भी एसेलरेशन होता है वहां वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उसने कहा बिकॉज इट इज एसेलरेटेड मोशन, तो सम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज कीप ऑन चेंजिंग, और वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, तो इट मे बी अ केस कि इफ वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है. यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन एक होता है कौन सा? सर्कुलर मोशन, एनीथिंग व्हिच इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ. तो क्या हम उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे? नो, इट इज नॉट सेट टू बी यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि तब वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल नहीं कर रहा है, उसका डायरेक्शन बदल रहा है, और जैसे जैसे डायरेक्शन बदल रहा है उसका ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, तब वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता, तब वो बन जाता है यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन. इसलिए यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन को यूनिफॉर्म मोशन नहीं कहते हैं. क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि एक्सेलरेशन, if there is acceleration, there is a change in velocity, and if the velocity is there, there might be some direction may change, and hence it is non-uniform. तो जहां direction change हुआ वहां पर motion become non-uniform. Example, a body moving in a straight path. Uniform motion हमेशा हम straight path में लिखते हैं, अगर हम उसका direction change कर देंगे then it is not considered as a uniform. A body moving in a straight path with same speed, non-uniform. Movement of car in a traffic is a non-uniform. Direction भी change हो रहा है, उसकी speed भी change हो रही है, become non-uniform. इसीलिए uniformly accelerated motion uniform motion नहीं हुआ, क्योंकि uniformly accelerated motion में direction बदल रहा है. This is a graph. Now this question, you have seen this graph. Lots of figure. There is a triangle, then rectangle, then again triangle, and two triangles, and again one there is a rectangle. Question is find the total displacement of the body from the following graph. Displacement होता है area covered by the path, area covered by the graph. तो area यहाँ पे कितना हो गया? ABF, BCFG, CDE, CGIE, ये सब एरिया है कवर बाय द ग्राफ विद टाइम एक्सिस. सो डिस्प्लेसमेंट इन VT ग्राफ इज एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ. डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है? एरिया. व्हाट इज द एरिया? अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, अगेन एरिया ऑफ ए ट्रायंगल CDE प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल. अब एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या हो गया? हाफ क्रॉस 2 into 5, हाफ बेस इंटू हाइट, देन रेक्टेंगल का साइड क्रॉस साइड, लेंथ क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, देन यहाँ 2 ट्राइंगल हैं तो मैंने इसको कर दिया 2 क्रॉस हाफ बेस इंटू हाइट.
बेस हो गया इसका 2, हाइट हो गई अगेन 5. लुक एट द ट्रायंगल CDE. CDE में 2 ट्रायंगल है, तो मैंने कर दिया हाफ 2 क्रॉस 5 को 2 टाइम्स, प्लस अगेन इस रेक्टेंगल को 4 क्रॉस 5, सबको ऐड किया, द आंसर बिकम 55. तो डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज 55 मीटर. Again, this is a graph. You have to interpret this graph. Interpret means have to see the graph and what the graph is showing. Study the speed time graph. इसको study करो. Find following based on the graph. Which path have constant speed? एक सी स्पीड से कौन सा पाथ चल रहा है? That is, देखो सीधी लाइन कौन सी है? AB and DE. When it is maximum speed reached, when it is at C, BC चला, जब C पे पहुंचा तो maximum speed है. When is the acceleration happen? कब कब acceleration हो रहा है? एक हो गया OA और दूसरा हो गया BC. Acceleration हमेशा slope होता है. So one acceleration is at OA and next acceleration is BC. Or if I am going to ask where is the retardation, then the answer would be CD. जब नीचे की तरफ ग्राफ आता है तब तो उसको कहते हैं रिटार्डेशन. The displacement of a moving object in a given interval of time is 0. Would the distance traveled by the object is also be 0? Justify your answer. This is the question already discussed. Displacement of an object can be 0. Example, if starting and finish position is same, then the displacement is 0. मतलब जहां से शुरू किया एक ने चलना और आके वहीं पर एंड किया, उस केस में डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 होता है. डिस्टेंस कैन नेवर बी 0. डिस्टेंस को कभी 0 नहीं कहते, बिकॉज इट इज अ टोटल पाथ ट्रैवल. सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट विल कवर सम डिस्टेंस. अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो कुछ ना कुछ तो कवर करेगा ही. तो डिस्टेंस कैन नेवर बी 0, बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी 0. So this is your whole PDF. You need to cover this whole PDF, your numericals, your theory, your everything. Have to write down the questions, this 10 question in your fair copy. See the video properly, understand the question properly, and then do in your notebook. Okay, thank you and have a nice day.